Okay, so yesterday we were discussing about the Einstein model. Okay, so we have seen at higher temperature Einstein model, okay, able to explain the experimental observed curve for the specific heat versus temperature. Okay, but it fails to explain the sharp decrease. Okay, at low temperature. Okay, we have seen when we use Einstein model that specific heat decreases exponentially at low temperatures. Okay, so today we are going to discuss this Debye model. Now, what Debye model assumptions? Okay, so number one assumption of Debye model is, okay, it says the model, okay, correspond to a linearization, okay, or simplification, okay, or say simplification of phonon spectrum curve, okay, of phonon spectrum, okay, by phonon spectrum by omega k is equals to सर वो corresponds to के बाद क्या लिखा है? phonon spectrum simplification. Okay, so इसका पहले इसका मतलब समझ लो, what is the meaning of simplification से पहले क्या लिख रहा है? linearization, linear curve. Okay, the model correspond to a linear curve of phonon spectrum. Okay, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो हमारा फोनोन स्पेक्ट्रम है मोनो एटॉमिक लैटिस का या हमारा डायटोमिक लैटिस का, उसको ये सिंप्लीफाई करता है. ओके, सिंप्लीफाई कैसे करता है? इट अज्यूम्स दैट ओमेगा के इज इक्वल टू वी नॉट के. ओके, ओमेगा के इक्वल टू वी नॉट के, दैट मीन्स ऑल के के लिए जो फ्रीक्वेंसी है, ओके, ऑल के के लिए जो वेलोसिटी वो भी कांस्टेंट है. और जो हमने देखा कि लॉन्गर वेवलेंथ में क्या होता है कर्व, हमारा कर्व देखो क्या है, एक बार कर्व देख लेते हैं फिर समझ में आ जाएगा क्या बोल रहा है ये. दिस इज आवर कर्व. ओके, ऑफ फोनोन स्पेक्ट्रम, और वी हैव ऑप्टिकल फोनोन आल्सो. So we have optical phonon also. Okay, so we now know that lower k values, okay, so this is plus pi by a, this is minus pi by a, okay, and this is my k value is changing. So this is for diatomic case, right? ये डायोटोमिक का है ना, ये तो. Yes sir. दो ब्रांचेस होती है ना डायोटोमिक में, और मोनोटोमिक में क्या होता है, ये ओनली एक ब्रांच होती है. ओके, सो हाँ, वी कमिंग ऑन दिस. ओके, okay, so now we see at lower frequency, okay, my omega is proportional to k. Okay, so now this model says कि सारी k के लिए सारे वेव वेक्टर के लिए ये रिलेशन ट्रू है. मतलब वो इस शेप को कंसीडर नहीं कर रहा है. ओके, इसका मतलब क्या बोल रहा है? पहली चीज तो ये क्या बोल रहा है कि जो स्पेसिफिक हीट में जो भी कंट्रीब्यूशन है, इसका मतलब क्या है? The majority contribution in the specific heat is due to acoustic vibration. Okay, the majority contribution to specific heat is due to acoustic vibrations. Okay, that means ये acoustic vibration के contribution को कंसिडर नहीं कर रहा है. ओके, और इसके पीछे लॉजिक भी है. लॉजिक क्या है इस रिलेशन के पीछे? लॉजिक क्या है कि अगर लो के वैल्यू है, ओके, लो के वैल्यू है तो वेवलेंथ हाई होगी. ओके, और लो टेम्परेचर पे क्या होता है? लो टेम्परेचर पे क्या होता है? एनर्जी लो होती है तो वेवलेंथ ज्यादा होती है या कम होती है? ज्यादा होती है. ओके, तो दैट मीन्स हमारा जो डिसएग्रीमेंट आ रहा है वो किस पे आ रहा है? लो टेम्परेचर पे तो आ रहा है.
यस सर। ओके, तो इसीलिए वो क्या कर रहा है, डिबे क्या कर रहा है, खाली लो वेव हायर वेवलेंथ के, मतलब लो एनर्जी के वाइब्रेशन को कंसीडर कर रहा है। ओके, दैट मींस ये क्या है, जो फोनोन स्पेक्ट्रम है उसको सिंप्लीफाई कर रहा है, बोल रहा है कि सभी ये स्पेक्ट्रम वैलिड है। ओके, ओमेगा के इज ऑलवेज, यहाँ पे जैसे ओमेगा के साइन किया होता है या कुछ और आता है, तो ओमेगा के इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू वेव वेक्टर। ओके, ये एजम्पशन है इस मॉडल का, नंबर 1 एजम्पन। और इसका मतलब क्या है कि मेजॉरिटी कंट्रीब्यूशन टू स्पेसिफिक हीट इज ड्यू टू द अकॉस्टिक वाइब्रेशन। ओके, नंबर एक और कंट्रीब्यूशन क्या है, एक और डिफरेंस क्या है, इट अज्यूम्स ओके दैट lattice vibrates, okay, lattice vibrate with 0 to omega d frequency up to, okay, the range of the lattice vibration is, the frequency of lattice vibration varies from 0 to wd, where wd is what, debye frequency। ओके, अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कल हमने जब आइंस्टाइन का मॉडल किया था उसमें फ्रीक्वेंसी की रेंज क्या थी, yesterday we discussed Einstein model, okay, उसमें फ्रीक्वेंसी की रेंज क्या थी, we assume all the atoms oscillator are vibrating with single frequency, यस सर। okay, single frequency, जबकि यहाँ पर क्या है, एक्चुअल में भी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है। तो ये बोल रहा है कि जो लैटिस वाइब्रेट विद 0 टू WD फ्रीक्वेंसी, और ये जो WD फ्रीक्वेंसी, इसको मतलब डिबे फ्रीक्वेंसी, इट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू योर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ योर लैटिस। ओके, वी विल सी दैट वन। ओके, सो नंबर थिंग, और कल हमने क्या किया था आइंस्टाइन मॉडल में, कल हमने कहा था कि सिंगल फ्रीक्वेंसी है। ओके, तो सिंगल फ्रीक्वेंसी कब आती है, यहाँ पर ये वैल्यू क्या होती है, 2 बीटा m1, ये वैल्यू क्या होती है, √2 बीटा m2, और ये वैल्यू क्या होती है, 2 बीटा 1/m1 प्लस 1/m2। ओके, तो ये मैंने उसने बताया था, अगर इस m1 इज इनफाइनाइट, या m1 इज इनफाइनाइट, या m1 इज ग्रेटर देन m2, तब ये क्या आ जाएगा, ये जो फ्रीक्वेंसी है ये क्या नीचे आ जाएगा, ये क्या बन जाएगा, सिंगल फ्रीक्वेंसी बन जाएगा। यस सर। ओके, इसका मतलब क्या है, कल जो हमने आइंस्टाइन मॉडल डिस्कस किया था वो क्या है, वो अकॉस्टिक कंट्रीब्यूशन को कंट्रीब्यूट कर रहा है, वो कंसीडर नहीं कर रहा है। ओके, आइंस्टाइन मॉडल इज कंसीडरिंग ओनली व्हाट, ऑप्टिकल फोनोन्स। ओके, तो ये डिफरेंस है डिबाई मॉडल में और आइंस्टाइन मॉडल में। और हमने जो देखा यस्टरडे, आइंस्टाइन, जो आपने आइंस्टाइन का कर्व देखा, ओके, आइंस्टाइन का कर्व देखा हमने, दैट कर्व वाज व्हाट, सर वीडियो नहीं आ रहा। okay, just 1 minute. Okay, so yesterday what we discussed, CV curve versus T. Okay, so we have seen that at lower temperature Einstein model says that it varies as a theta E by T. Okay, so this theta E by T is due to sharp decrease, at low temperature is due to optical phonons. Okay, क्योंकि ऑप्टिकल फोनोन तो लो टेम्परेचर पे, ऑप्टिकल फोनोन तो क्या फ्रीज आउट हो जाते हैं ना, एनर्जी ज्यादा होगी तभी ऑप्टिकल फोनोन मिलेंगे, जैसे जैसे टेम्परेचर कम करते जाओगे वैसे वैसे आपका ऑप्टिकल फोनोन क्या होगा, फ्रीज आउट हो जाएगा। ओके, दिस इज ड्यू टू ऑप्टिकल फोनोन। ओके, और हायर टेम्परेचर पे जो कंट्रीब्यूशन आता है ऑप्टिकल फोनोन का, वो ऑलमोस्ट इक्वल टू अकॉस्टिक फोनोन्स। सो अगर यहाँ पे जो 3 आ रहा है, जैसे अगर अकॉस्टिक कारण ये वैल्यू आ रही है, 3 आ रहा है, तो स्लाइटली कम आएगा ऑप्टिकल फोनोन। ओके, so this is the difference between Einstein model and your Debye model. Now we'll, हाँ बोलिए। आपने एक लाइन बोली थी कि लो टेम्परेचर को एनर्जी लो होगी, तब आपने वेवलेंथ मतलब कम हो गए बोला था। Your voice is breaking है ना, हाँ बोलिए। ज्यादा होगा ज्यादा। हेलो सर। हाँ आपने लो टेम्परेचर होगा तब वेवलेंथ ज्यादा होगी, ऐसा ही बोला था क्या? लो टेम्परेचर पे वेवलेंथ ज्यादा होती है ना, एनर्जी कम होगी तो वेवलेंथ ज्यादा होगा। हाँ वही हाँ, ठीक।
Okay, so सर हाँ सर हाँ हाँ ये लैटिस वाइब्रेट विद 0 to WD, ये लास्ट पॉइंट क्या है सर? आई डिडंट अंडरस्टैंड दैट. भी कल हमने जो कब बोला था कि हमारा जो क्रिस्टल में जितने भी एटम्स हैं, ओके, यस सर. वो दे आर इंडिपेंडेंटली वाइब्रेटिंग विद सिंगल फ्रीक्वेंसी. ओके, बट Yes, sir. एक्चुअल में तो आप हमारा एटम बॉन्डेड है ना, द इंडिपेंडेंट मोशन इज नॉट पॉसिबल. Yes, sir. सो कोई तो कुछ ना कुछ तो फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी की रेंज होगी, एक्चुअल में होती भी है. ठीक है, Sir. तो बस उसी को बोल रहा है ये कि that all the lattice vibrate with a 0 to WD, maximum the range of frequency is 0 to WD, but WD is the Debye frequency. Okay, Okay, okay. सर मतलब डीबाई मॉडल में ये तीन assumptions we have to हाँ assume हाँ just. यस, ये दो, Okay, sir. ये एक और दो ऑप्शन नहीं है ये, तो इसका मतलब यही है कि अगर हम ये रिलेशन ले रहे हैं, ओके, दैट मींस ओनली वी आर कंसीडरिंग लॉन्ग वेवलेंथ acoustic vibrations. Okay, these vibrations. Okay, Okay, sir. चलो, so this is clear. Now we'll calculate the specific heat due to Debye models. Okay, so now we know the relation what we have to carry out. We have to use wk is equal to v naught k. V naught is constant, which is the velocity of sound. Okay, now we know the density of states. Okay, density of states gk dk in 3D. डेंसिटी ऑफ स्टेट्स क्या होती है वैल्यू क्या होती है, वी कैलकुलेट यस्टरडे, दैट इज v अपॉन 2 पाई स्क्वायर. ओके, 2 पाई स्क्वायर k स्क्वायर dk, ये होता है क्या डेंसिटी ऑफ स्टेट्स? Yes, sir. Okay, so now in 3D, okay, 3D we have discussed that we have in solid, in monoatomic solid, okay, we have three modes. If you say omega versus k relation, okay, so we have seen there are three type of mode. One is what? Acoustic, AO mode. Okay, Yes, sir. okay, LO, sorry, Acoustic transfers and longitudinal acoustic and transverse acoustic and transverse acoustic 2. Okay, so each k value there are three A1, A2, A होगा ना सर? TA. Okay, TA2. Okay, और so A LO longitudinal, okay, and transfer, longitudinal and transfer. Okay, so ऑप्टिक या acoustic सर? Longitudinal this is longitudinal acoustic. LA था क्या? तो LA ये था, हाँ. LA था, और ये क्या था? हाँ, TA. Tier 1 वो Tier 2. सही है सर. Acoustic. Okay, okay. This is optical. ये optical था. Okay, so transfer optics. You can say OT. Okay, so OT1, OT2. Okay, so there are three vibration per k values. Okay, so now for 3D case, my density of state will modify as 3 into v upon 2 pi square k square dk. Okay, now write this expression of k, you can write in terms of frequency also, this relation. Okay, I told you in the second class, 3 v upon 2 pi square. Okay, now k is what? Omega Omega square, by V naught square. v naught square, और dk क्या ले सकते हैं हम लोग? d omega by V omega naught. d omega by dk and d omega by dk. Okay, and this is again what? This is again omega naught. So I can write this as a 3 v upon 2 pi square omega square v naught cube d omega. This is my density of state in 3D. Okay, correct है? Let me check. V upon 2 pi square v square, correct है, ठीक है. So now these are total number of modes. These are, sorry, density of modes. Okay, density of modes. और टोटल नंबर ऑफ मोड्स कितने होते हैं सॉलिड में? 3n. n, वन डायमेंशन. ओके, एंड थ्री डायमेंशन में 3n. 3n. okay, total number of modes in 3 dimensions are 3n. okay, so ये क्या है? the distribution of modes, okay, with frequency, कि किस frequency पे कितने मोड हैं, किस frequency पे कितनी energies हैं, कितनी states हैं. okay, so now if I want to calculate total number of modes, okay, तो total number of modes कहाँ से आएगा? 0. if it is a density of states, okay, if I integrate this from 0 to WD,
GW DW. Okay, this should give me total number of modes. Total number of modes is what? 3n. Okay, now put these values and give me the value of Debye frequency in 3D. Calculate what is the Debye frequency का formula क्या है? ये क्लियर है ना तुमको? दिस क्लियर? सर ये क्लियर है, लेकिन ये इंटीग्रेशन इक्वल्स टू आप डीबे फ्रीक्वेंसी बोल रहे हैं क्या? कौन सा? ये इंटीग्रेशन? हाँ, ये तो क्या डेंसिटी ऑफ मोड्स है ना? पर यूनिट फ्रीक्वेंसी में कितने मोड हैं? पर यूनिट फ्रीक्वेंसी में कितने मोड हैं? उसको डी को मल्टीप्लाई किया तो ये डेंसिटी ऑफ स्टेट्स आ गया. ओके, इसको 0 to WT इंटीग्रेट करेंगे तो टोटल मोड्स आ जाएंगे. भी इसका मतलब क्या है? इस एक्सप्रेशन का मतलब क्या है? इस एक्सप्रेशन का मतलब क्या है? इस एक्सप्रेशन का मतलब है कि जैसे मेरे पास W1 फ्रीक्वेंसी पे ओके तीन स्टेट्स हैं. ओके, W1 फ्रीक्वेंसी पे तीन स्टेट्स हैं. ठीक है, या फिर बोलो सपोज ये एनर्जी है 1 eV एनर्जी है. ठीक है, थ्री स्टेट्स हैं. फिर W2 फ्रीक्वेंसी पे मेरे पास 4 स्टेट्स हैं. ओके, तो इन सारी स्टेट्स का दिस इज DW1. ओके, और ये सारी फ्रीक्वेंसी सबकी फ्रीक्वेंसी क्या है? W1 है. इन सबकी फ्रीक्वेंसी क्या है? W2 है. दिस इज DW2 रेंज. ओके, तो मुझे सारे मोड को ऐड करना है. तो ये क्या? डेंसिटी ऑफ स्टेट्स. ओके, डेंसिटी ऑफ स्टेट्स को इससे मल्टीप्लाई किया तो मुझे ये नंबर मिल गया. तो सारी जितनी भी फ्रीक्वेंसीज हैं सबको मैं ऐड करता जाऊंगा. ओके, सबको मैं ऐड करता जाऊंगा तो आई विल गेट द टोटल नंबर ऑफ मोड्स. ओके, और टोटल नंबर ऑफ मोड्स कितने होते हैं? नंबर ऑफ एटम इन द क्रिस्टल. ये 3 डायमेंशनल क्रिस्टल मोनोटॉमिक क्रिस्टल है, दैट विल बी 3n. यस, वो क्लियर है, लेकिन दिस इज इक्वल है. आई एम आस्किंग दैट इज दिस इक्वल्स टू डीबे फ्रीक्वेंसी, दिस अबव एक्सप्रेशन जो सॉल्व करो ना इसको पुट करके निकालोगे तो The integration limit, upper limit is Debye frequency there, omega d. यस. ओके, आई एम दैट आस्किंग. तो इसमें जब पुट करोगे वैल्यू को तो ये तो निकलेगा ना. तो आंसर क्या आएगा? इसको इंटीग्रेट करो. ओके, so if you solve this one, WD will what come? It will come WQ it will come 6 pi square n upon V. Okay, and V naught Q. ये आ रहा है क्या? Yes, sir. Yes, sir. Okay, and if you say WD, okay, WD will be what? 6 pi square n upon V naught. हाँ बोलिए. ये 3D में है. ये जो Debye frequency 3D में है. Similarly, you can calculate for Debye frequency for 2D lattice, 1D lattice. Okay, that is homework. Okay, so सर एक हाँ. चीज और भी है क्या एक्सप्रेशन में? क्या चीज? ओमेगा डी क्यूब में नहीं, ये 6 pi square n by V 1/3 V naught only, यही है. अच्छा, ओके सर. Okay, so by solving this we'll get. Okay, so our homework है. Okay, calculate. Okay, Debye frequency for 1D and 2D crystals. सर वो तो एक बार फिर से आप बोलेंगे जीके डीके में हमने 3 से वो मल्टीप्लाई क्यों किया उस सेकंड लाइन पे? क्योंकि वो हर के लिए हमारे पास 3 मोड्स है ना. हाँ, मतलब हम ऑप्टिकल को हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं इधर. ऑप्टिकल को टोटली नेग्लेक्ट करते हैं हम लोग यहाँ पे. अच्छा ओके सर. Okay, so this is my expression for Debye frequency, cutoff frequency. Now I want to हमको कैलकुलेट करना स्पेसिफिक हीट, और स्पेसिफिक हीट कैलकुलेट करने के लिए हमको क्या चाहिए? हमको एनर्जी चाहिए. ओके, सो हाउ टू कैलकुलेट एनर्जी? सो वी कैन कैलकुलेट एनर्जी, टोटल एनर्जी. ओके, as we can calculate energy is E average energy per mode. Okay, and then we have GW DW. Okay, तो हमको एक मोड की एनर्जी पता है. ओके, आउट ऑफ फोकस हो गया क्या? यस सर. यस सर. यस सर. हाँ ठीक ठीक है.
Okay, so now I want to calculate the average energy. Okay, so average energy already yesterday we calculated what is the average energy. Now average energy और कितने मोड है, हर frequency पे कितने energy levels हैं. Okay, if you calculate this one, this will give you total energy and your W varies from 0 to WD. Okay, 3D में करना है सर, हाँ 3D में करना है सर, 3D में yes 3D में. Okay, 3D में 3D कैलकुलेट कर रहे हैं अभी. ओके, नाउ कैलकुलेट टोटल एनर्जी कितना आएगा, कैलकुलेट करो इसको, इंटीग्रेशन कैलकुलेट करो. सो वी नो व्हाट इज 0 WD. ओके, एनर्जी यस्टरडे वी कैलकुलेट, एवरेज एनर्जी कितना होता है 1 अपॉन ओके E नो H कट न्यू अपॉन KT KBT. ओके, -1 दिस इज एवरेज एनर्जी and density of state. Just now we have written the expression. What is the expression of density of state? The expression for density of state is okay. लेकिन सर उधर तो ओमेगा नॉट था ना, कहाँ पे? वो हाँ तो आओ एवरेज, लेकिन यहाँ तो वेरी कर रहा है ना वहाँ पे. हाँ वही तो प्रॉब्लम है ना इधर. हाँ. उधर हमने कैलकुलेट किया टोटली ऑप्टिकल मतलब मोड को कंसीडर करके, सिर्फ ऑप्टिकल मोड को कंसीडर करके. इधर हम ऑप्टिकल मोड को पूरा निगलेक्ट कर रहे हैं, पर फिर भी हम वही एवरेज एनर्जी का फॉर्मूला ले रहे हैं. मेथड तो वही है ना, बस यहाँ पे ओमेगा वेरिएबल हो जाएगा हर फ्रीक्वेंसी पे. वहाँ पे एक ही फ्रीक्वेंसी थी, एक ही फ्रीक्वेंसी पे एवरेज एनर्जी क्या थी, ये थी. ओके, ओमेगा 0 पे. अब ओमेगा 1 पे क्या होगी, ओमेगा 1 हो जाएगी. ओमेगा 2 पे ओमेगा 2 हो जाएगा. बस यही है. ठीक है. सो नाउ पुट द एक्सप्रेशन फॉर डेंसिटी ऑफ स्टेट. ओके, so what is the density of state expression? Just now we calculated. Okay, this is V upon 3 into V upon 2 pi square. Okay, omega square V naught square. Okay, so पूरा लिख देता सॉल्व करके. V naught V square V naught cube. Okay, and dW. Okay, सॉल्व करो इसको. So now if you solve this one, okay, this will give you what? This will give you total energy is equal to 3V. Okay, H cut this one. Okay, 2 pi square this one. This is constant. Okay, I told you in the beginning, V cube. Okay, from 0 to WD. Okay, and this will give me omega square omega cube. Okay, exponential. Okay, H cut omega upon KT -1. Okay, फिर पाई स्क्वायर कैसे हो, ऊपर पाई है ना. कौन सा? ये तो पाई Pi स्क्वायर है ना. 3D डेंसिटी ऑफ स्टेट्स 3D V upon 2 pi square है. Okay, now you have to solve this integration. Okay, so now if you solve this integration, okay, what will happen? Okay, so say your H cut omega by KT is X. Okay, so if I say your okay, so this is my X cube. Okay, H cut omega by KT if you put X. Okay, so if I put H cut omega, okay, sorry, H cut omega by KT, KBT is X. Okay, so what will happen to this expression? So this expression will become 3. Okay, 3V H cut. Okay, 2 pi square V naught Q. Okay, KBT upon H cut. Okay, power 4 0 H cut omega D. Okay, upon KBT X cube EX -1 DX. ये आ रहा है क्या, चेक करो. ओके, सो इसको x कर दिया तो ये x हो गया, x EX -1. ओके, नाउ H cut omega by KBT is X. Okay, so omega will be what? KBT upon H cut. Okay, KBT upon H cut. Okay, और बाहर पे see T. Okay, so and then your d omega. Okay, so d omega एक H का KBT by H cut एक और आ जाएगा. So this becomes T4. Okay, so this is the expression for your total energy. बाकी लोगों का भी आ रहा है क्या? yes sir. Yes, sir. Okay, d omega will be KBT upon H cut. Okay, dx. Okay, Wow. So we don't need to integrate at all. We don't need to do the integration here. We already got that e to the power 5.
हाँ, तो अभी this is the integration. Now we have to solve this one, okay, for low temperature, and now we know what is Debye frequency. You have to bring this expression in the form of Debye frequency, okay. Debye frequency is what? Just now we written Debye frequency is NV naught cube 6 pi square. हाँ, so I'm writing here, okay. Debye frequency is 6 pi square dq 6 pi square n upon v naught cube, okay. And one more thing, here we are defining a temperature, Debye temperature, as h cut omega d is equal to kb theta d, okay, where theta d is a Debye temperature, okay, which is equal to h naught v naught kd, okay. So theta d is what? Theta d is your Debye temperature, Debye temperature, okay. Now if you solve these things, okay, so I'm directly writing the expression. This is the simple mathematics, you can do it, okay. So if you solve this one, this will give you E equals to 9 n kb T4 1 upon theta d cube, okay, expression 0 from theta d by t, okay, x cube upon ex minus 1. ये आ रहा है क्या, चेक करो यहाँ से, okay. So v naught q you can write in terms of Debye frequency, and Debye frequency you can convert into theta d, kb theta d, okay. So if you put this values, okay, you'll get this one, this term. Check करो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, okay. So your 1 upon theta d, 1 upon theta dq is what? 1 upon theta dq is kb upon h cut w cube, okay. And this is, okay, and if you solve this one, this will give you kb, okay, h cut cube and v upon 6 pi square and v naught cube. चेक करो यार क्या यार, Yes sir. बाकी लोग भी सर ये ऊपर वाला इंटीग्रेशन सॉल्व किए रिजल्ट आएगा। अभी इसको इंटीग्रेशन सॉल्व नहीं किया हमने, ओके. हमने यहाँ पर एक Debye टेम्परेचर डिफाइन कर लिया है, ओके. तो इस लिमिट को हमने कर दिया 0 to थीटा डी बाई टी, या एक्स क्यूब बाई टी, ये ऐसा कैसा ही है. और इस वाले को, ओके, इस वाले को हमने थीटा डी की फॉर्म में लिख दिया बस मॉडल के. और थीटा डी क्या है, यहाँ से निकल जाएगा थीटा डी आपका, ओमेगा डी आपको पता ही है, ओमेगा डी इक्वल टू के बी क्यूब थीटा डी क्यूब. तो ये वैल्यू पुट करके इसमें वी नॉट क्यू की वैल्यू पुट कर दो, तो आपका ये आ जाएगा रिलेशन. चले आगे. Yes sir. ठीक है, सिंपल मैथमेटिक्स हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है. नोट्स तो मैं भेजूं, नोट्स तो बुक में, तो नोट्स मटेरियल में तो सॉल्व किया भाई है. सो दिस इज योर वैल्यूज, ओके. Now we have to solve this for higher temperature as well as for lower temperature, okay. So for high temperature, okay, high temperature, what will become my h nu, okay, h nu or kbt. So kbt will be greater than what? Your h cut omega d at higher temperature, okay. So what will happen? This is my x cube ex minus 1, okay. Now my x is what? My x is h cut omega d upon kt, okay, kbt. Now if t is very large, this become x become small. So if x is small, I can write this x cube equal to ex. I can write 1 plus x, okay, 1 plus x minus 1, okay. So 1 will cancel, so this I can write as x square. ये clear है? Yes Okay, sir. so this term I can replace by x square for higher temperature. So this term I can write, okay, e is equal to 9 n kb. सर ये t टेंस टू किधर हो रहा है कौन सा? लास्ट में? ये वाला infinite. If t is high, Okay, sir. if t is high, okay, Yes, sir.
x is less than 1, okay, but okay, or x to 0, okay. So in that Okay, condition we can open this as a 1 plus x, okay. Okay, sir. So this become 9 nkb t5 upon theta d cube, okay, and this will become 0 theta d by t. This become x square dx, okay. Now solve this one, okay. So if you solve this one, this will give you e equals to 9 nkb t4 theta d cube into x cube upon 3, okay, theta d by t 0, and this will give you 9 nkb t4 theta d cube, okay. This become theta d cube upon t cube, okay. So इससे कैंसिल हो गया, पावर कैंसिल हो गया, 1 बच गया, okay. और 3 से कैंसिल हो गया 3, तो हमको बच गया 3, okay. So I got 3 nkb t. This is total energy, okay. And if you want now calculate cv. Cv is what? Delta E upon delta T, okay, at constant volume, and this will give you 3 nkb, again 3R, okay. And this is what? This is your Dulong-Pettit law. Dulong-Pettit law, okay. So at higher temperature, your Debye model also again agree with your experimental observation, okay. So classical model भी 3R देता है, Einstein model भी 3R दे रहा है, and your Debye model also again is giving your high temperature specific value equal to 3R, okay. Now we have to solve this integration for low temperature, okay. So for low temperatures, okay, for low temperature, what will happen? Your kBt is small than your h cut omega d, okay. So if t is small, okay, so if t is small, then what I can write? e to the power minus x basically. नहीं, अगर इस लिमिट को देखो, if theta 0 to infinite लिख सकते हैं क्या? इसको infinite लिख सकते हैं, okay. If t is small, okay, if t is small, and this is what equal to, this is kbt theta d, okay. So if t is small, I can write this limit. If t is small, okay, then theta d by t tends to infinite. बस इसमें infinite put कर दो. और x भी बहुत बड़ा होगा ना? उसको रहने दो, इसको हम सॉल्व कर देंगे हम लोग, ठीक है. सो इसको इधर इंटीग्रेशन सॉल्व हो जाएगा. सो e, okay, e will be 9 nkb t4, okay, upon theta d cube, okay, and this limit becomes 0 to infinite, okay, x cube ex minus 1 tx, okay. और ये इंटीग्रेशन तो आपने सॉल्व करा होगा जब आप ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर रहे थे मॉडर्न फिजिक्स में, ओके. इस इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या है सर? e की पावर x माइनस 1 को e की पावर x नहीं लिखेंगे सर? उसको सॉल्व कर देंगे ना हम डायरेक्टली. सॉल्व ही कर, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला पता ही हमको, तो हम क्यों झंझट करें. इसका ये डायरेक्टली सॉल्व कर, कंट्रोल इंटीग्रेशन डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, ओके. जीटा फंक्शन से करो या कंट्रोल इंटीग्रेशन से करो, यू कैन डायरेक्टली सॉल्व दिस, एंड द वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रेशन नियर बाय 3 0 to x क्यूब ex minus 1 dx, इसकी वैल्यू होती है pi 4 upon 15, ओके. pi 4 upon 15 इस इंटीग्रेशन की वैल्यू होती है, ओके. सो पुट दिस वैल्यूज, ओके. सो दिस विल गिव यू व्हाट? दिस विल गिव यू 9 nkb t4, okay, t4, and theta d cube, okay. This become pi 4 upon 15, okay. So it become 3 upon 5. So your expression for total energy become 3 by 5 nkb, okay, nkb, and you can write t upon theta d cube, okay, into t. एक t एक्स्ट्रा छोड़ देते हैं क्योंकि डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये चला जाएगा, ओके. सो नाउ इफ आई 3 by 5, ओके. और तो कुछ चेंज नहीं है ना, 3 by 5 पे आ रहा है, ठीक है.
Okay, now just differentiate this one. Pi to the power 4. Pi to the power 4. Pi to the power 4. Okay. Pi power 4. Okay. Pi power 4. Okay. So now if you differentiate this one, I want CV. Okay. So DE upon DT. Okay. At constant volume. Okay. So ये क्या आ जाएगा? Power इधर आ जाएगा आगे. तो जाएगा 9 pi 4. कुछ और मिस्टेक है? एक बार चेक करो. कुछ और मिस्टेक है क्या इसके अंदर? 3/5. Okay. 3/5 was okay. So this is T4. Okay. Sorry. This is T4. इसको T4 लेना दो. This is 1 by theta d cube. This is T4. Okay. Now differentiate T4. So 4 आगे जाएगा. This become 12 by 5. Okay. 12 by 5. Okay. And KB as per the theta upon theta d cube. Okay. Pi 4 also. Pi 4 also is there. Pi 4. Okay. T upon theta d cube. ये आ रहा है क्या? Differentiate करने पे? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So now from this expression. Okay, this is the correct expression. Okay, for CV, from this way you can see my CV is proportional to TQ. Okay, so at low temperature, Debye model is able to explain. Okay, what we got from experimentally. सर ये सीवी प्रोपोर्शनल टी टू द पावर 3 निकालने के लिए वो इंटीग्रेशन करने का तो जरूरत ही नहीं था ना. हाँ, डायरेक्ट भी कर सकते हैं अगर आपको पता है कांस्टेंट आएगा तो वैसे भी कांस्टेंट क्या आएगा? वैसे कांस्टेंट आएगा पता ही तो वैसे भी कर सकते हैं डायरेक्ट. एक्चुअली ऐसा ही करते हैं. अगर जैसे हाँ अगर आपको इंटीग्रेशन पता नहीं हो ये वाला, आपको पता ही है 1D 2D में जैसे कुछ और एक्सप्रेशन आ जाएगा तो आपको उसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है. आप जैसे ये देख लो, आपकी एनर्जी हमेशा क्या आएगी? T4 आएगी. ओके, सो इन जनरल क्या होता है अगर आपका 3 डायमेंशनल क्रिस्टल है. ओके, सो यू गेट एनर्जी को मैं इंटरनल एनर्जी बोलते हैं. इंटरनल एनर्जी विल प्रोपोर्शनल टू T4. ओके, एंड योर CV विल बी प्रोपोर्शनल टू TQ. Okay, similarly if it is 2D, okay, and this is for what? This is for when omega is proportional to k. This type of relations. If अगर ये कुछ k square आ जाएगा, then this will change. We will see that one also. Okay, there are lot of calculations and a lot of problems are there. Okay, so this is for linear curve. Linear curve. If your internal energy T4, you'll be this way. Similar 2D, it will be what? T cube, and your CV will be what? T square. For 1D, your U will be what? T square, and this is all your homework. Okay, you have to calculate this all CV proportional to. In general क्या होगा? If it's a d-dimensional crystal, if it's a d-dimensional crystal, CV proportional to TD. U is proportional to what? TD plus 1 and CV proportional to TD. Okay, yes. अगर two dimensional crystal है जैसे graphene हो गया, then your D value will come around 2.4, 2.3, 2.2, almost equal to 2. Okay, so these relations are true for what? Only this kind of relations. Okay, and suppose if I put a power S here, okay, then this will become okay. So I'm writing here. We'll check that one. Okay, so if this is equal to KS, K square, S is square, in that case your CV will be what? Your CV will be simply D dimension. The CV will be proportional to TD by S. We'll check this one. Okay, अभी नोट कर लो, इसको हम वेरीफाई भी करेंगे बाद में. ये पॉइंट क्लियर है ना? Yes sir. Okay, so this was your Debye model. Okay, now let us solve 1 or 2 small problems which came in exam. इसको मिटा दूं मैं? Yes, sir. Yes sir. Yes, sir. Okay. Sir, हाँ बोलिए. इसमें सर ये जो T to the power left right hand side sir. हाँ Right. No हाँ, sir. हाँ. In right hand side, हाँ. T to the power 4 and theta d cube. हाँ. फिर theta d cube to the power 4 कैसा हो गया? T4 तो अभी तो मैंने सॉल्व किया, खाली इसको वैल्यू पुट किया है और 30 को वो सेम एक्सप्रेशन को 3/5 लिख दिया बस. तो डिफरेंशिएट तो यहाँ पे किया है. थीटा डी तो क्यों ओके सर, ओके सर, ओके सर. थीटा डी है ना, ये थीटा डी है. छोटा मोटा कैलकुलेशन तुम कर लिया करो यार, ये ठीक है, बोर्ड पता चलता नहीं है. ओके, सिंपल कैलकुलेशन है, मिटा दो इसको. Yes. So this one, okay, now one problem came in exam, okay, in 2016 net. Okay, net
2016. Okay, so this says we have 1D chain. Okay, 1D crystal, 1D chain of atom. Okay, and they are given that your frequency is proportional to wave vector. Okay, and they have given this proportionality constant equal to c. Okay, instead of velocity they give c. Okay, so they are asking calculate the Debye frequency. Calculate Debye frequency. Okay, for 1D chain. Okay, for it's 1D crystal, for 1D crystal. कैसे करोगे इसको? And they given the density of atoms. We have 1D chain. Okay, and density of atom, that is n by l. Length is l. Okay, atoms are n, and the density of atom is n by l, that they are given. So they are asking what is Debye frequency. कैसे कैलकुलेट करोगे? Anyone? Yeah, so it is in जैसे मैं 3D में किया था, डेंसिटी स्टेट पता होनी चाहिए पहले तो, नहीं 1D में. Okay, so in 1D what? In 1D we know density state is what? Gk is L pi upon dk. Okay, if you write in terms of omega, that will come L upon pi. Okay, d omega upon group velocity vg. Okay, vg is again d omega by dk. Okay, so L upon pi. Okay, d omega, and vg is what? C here, d omega by dk. Vg is what? D omega by dk, and here it is c. So this is c. Now what you know the density of states. Okay, you know density of state. Now total number of modes. What total number of modes are n? Is a one-dimensional crystal. Okay, to integrate this from 0 to WD, density of state g omega d omega. Okay, and tell me what is WD? So omega, sorry, pi cn. Yes, pi cn. Okay, it will go n pi c or pi cn. It will come. Okay, एग्जाम में आंसर गलत दे रखा है, बट करेक्ट आंसर यही है. तो n by l कहाँ से मतलब क्या चीज? n by l क्या था? N is number of atom. Okay, and is the length of shell. So density, one dimensional density of atoms. Density of atom. Yes. चेक करो ये आंसर आ रहा है क्या? Yes, sir. आ रहा है? ओके. सो Yes, sir. 3D हमने निकाल लिया, 2D हमने 2D 1D आपने अभी भी निकाल लिया है. ओके, 1D में मतलब क्या, हमारे केस में क्या होता है, यहाँ पे वी नॉट होता है, तो हम जब निकालते हैं तो हमारा क्या आता है, WD इक्वल टू आता है n V नॉट C आता है. ओके, डबल मॉडल से यहाँ पे वी नॉट सीधे रखा है. ओके, 2D आपका होमवर्क, 2D आपको पाई भी, हाँ पाई सॉरी पाई एन पाई वी नॉट. ओके, सो 2D आपका होमवर्क है. ओके, सो नाउ यू हैव टू कैलकुलेट स्पेसिफिक हीट. ओके, फॉर 1D specific heat VD for 1D 2D. Okay, 3D हमने कैलकुलेट कर लिया, and then you have to calculate entropy also, entropy for 1D and 2D. ये आपका इसमें C को V नॉट ले लिया. C को V नॉट ले लिया. भी C क्वेश्चन में C दे रखा है. जैसे हम डेरिवेशन करते हैं तो हमारा क्या होता है, हमारा रिलेशन क्या होता है. अभी हमने डिबे मॉडल में किया, वो C के क्या था, V नॉट था ना, कांस्टेंट था, इसलिए उन्होंने यहाँ पे C दे दिया, इसको कांस्टेंट दे दिया. ठीक है, वो दिख रहा है नीचे, ऊपर से होमवर्क दिख नहीं रहा है. करोगे क्या, होमवर्क क्या है, CV आप कैलकुलेट CV 2D and you have to calculate entropy for 1D and 2D. ओके, V नॉट लेके करना है क्या? क्या चीज? ये V नॉट लेके करना है क्या? हाँ, V नॉट लेके करना है. एग्जैक्टली जैसे हमने डिबे मॉडल किया है, तो डिबे मॉडल पर 1D 2D जैसे 3D में सॉल्व किया है, एग्जैक्टली आपको 1D और 2D के लिए सॉल्व करना है. खाली वेरिएशन कहाँ पे आएगा, डेंसिटी स्टेट्स में आएगा, एंड डेंसिटी स्टेट फॉर 1D 2D वी हैव ऑलरेडी डन. नंबर ऑफ मोड्स is 3n in 3D, in 2D it will be 2n, and for 1D it will be n only. Okay, so let us do one more problem, this small 5-minute problem. Okay, इसको मिटा दूं? Yes, sir.
So we have given, ये बंद क्यों रहता है बार बार? So we have given a 3D monatomic crystal, and their phonon relations are given by 2 beta 3 minus cos kx a minus cos ky a, okay, minus cos kz a, okay. So he's asking calculate the density, calculate density of states, okay, in long wavelength region, करो. So 3D crystal है, so you already know what? You already know GK DK is what? V upon 2 pi square K square DK. Okay. Now, in order to convert this into in terms of frequency, okay, convert this in terms of frequency, और ओमेगा और जो k में रिलेशन आएगा, वो यहाँ से आएगा, इस इक्वेशन से आएगा. So solve first this one for long wavelength region. Okay. So you know for long wavelength region क्या हो जाएगा? For long wavelength region, okay, your k is निकाल रहे हैं ना सर? हाँ 3D के लिए. 3D के लिए. So for long wavelength region you can write m omega square 2 beta, okay, 3 minus cos kx, you can write 1 minus kx upon a, kx square क्या आएगा? a square a by 2 स्क्वायर है क्या? हाँ सर स्क्वायर होगा. स्क्वायर k square kx. हाँ ठीक है. Similarly you can write here 1 minus a whole square by 2 factorial. 2 तो आ रहा है, ये kx a का स्क्वायर बाय 2, ओके. सिमिलरली ky a का स्क्वायर बाय 2, ओके. And you can write this one because k is long wavelength region, so k is very small, okay. K tends to 0, so you can write cos kx, okay, equal to what? 1 minus kx square by 2, okay. By 2 factorial. Okay, so this one minus 1 minus kz a upon 2 का square, okay. So solve this one, this relation. So this will give you, इसमें स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन लगाया ना? हाँ यस यस. ओके, कॉस का मैंने सीरीज खोला है. कॉस का सीरीज क्या होता है? कॉस एक्स का सीरीज क्या होता है? 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2, ये होता है क्या? ओके, सम पावर x4, ओके. सो सीरीज लगाया है, ओके. तो बाकी आगे के टर्म को मैं नेग्लेक्ट कर दिया, आगे के टर्म को, और बस ये टर्म ले लिया हमने, ठीक है. तो m ओमेगा स्क्वायर, दिस विल गिव यू 2 बीटा, ओके. 3 तो कैंसिल हो जाएगा, ओके. एंड दिस विल गिव यू kx स्क्वायर प्लस ky स्क्वायर, सो दिस विल 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा ये वाला, ओके. सो दिस विल गिव यू k स्क्वायर a स्क्वायर, okay. So now you have relation between omega and this one, okay. हाँ 2 कैंसिल हो गया ना? ये दूसरा 2 कहाँ से आया सर? 3 तो कैंसिल हो गया. हाँ 2 भी कैंसिल. 2 भी कैंसिल हो गया. So now you have relation, okay. You have omega. Your omega is equal to what? Beta upon m, okay, k into a. ये हमने पहले निकाला ये रिलेशन, ओके. Now just change this g omega d omega, okay. So g omega d omega क्या आएगा? Okay, v upon 2 pi square, okay. Instead of k square, what we can write? W square, okay. W square by a square beta, beta upon m, beta m by beta क्या आएगा? Beta upon m beta, ऊपर बीटा हाँ beta m beta, okay. 2 pi square and dk, okay. So you solve this one, okay. So this is v upon 2 pi square, okay. And this is 3-dimensional solid. 3-dimensional solid है तो क्या करना पड़ेगा? This is 3-dimensional solid. से मल्टीप्लाई कर.
3 से यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. ओके 3v. ओके एंड इफ यू v स्क्वायर a स्क्वायर बीटा बाय m. ओके dk will be your what, m upon beta. okay a. So a नीचे. okay so if you solve this one totally, I am writing answer just to check it. okay so if you check this one, okay I have already solved. gw should come 3v upon 2 pi. okay m upon beta a square power 3/2 w square. तो यहाँ पे a क्यूब हो जाएगा. ये a क्यूब तो ऑलरेडी है ना, a क्यूब है ही. m ये 3/2 m है. ओके बीटा ये एक बीटा हाफ बीटा 3/2 बीटा है. ओके ओमेगा स्क्वायर है 3v/2 पाई स्क्वायर है. ठीक है आ रहा है. ये सर वो तीन हम बस 3 मोड के लिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्योंकि थ्री डायमेंशनल है इसलिए 3 मोड है. तो 3 डायमेंशनल में 3 मोड्स होंगे तो उसको मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं हम लोग. ओके ठीक है अब इसको अगर इंटीग्रेट करेंगे तो तो ये m अंडर m बीटा के बाद a भी मल्टीप्लाई किया है क्या राइट में? हाँ ये नीचे ये है ना. यस सर. डीके निकाला हमने. डीके की वैल्यू. ओके सर. okay so I'm stopping here. okay so we will do some more problems on specific it on Monday. okay एग्जाम में जो प्रॉब्लम्स आई हैं वो चेक करेंगे जेस्ट वगैरह में TFR में, और बाकी प्रॉब्लम्स करेंगे हम लोग. ओके ओके सर, थैंक यू सर. थैंक यू.